Good morning to everyone. How are you? I hope all will be well. Today we will discuss word problem. We have done 1 to 4 question in our previous lecture. Today we will start question number 5. Okay, so let's start. Yes beta, question number 5 is your Sama bought 72 candles. She put 8 candles in each packet. Each packet. Okay, each packet. How many packets did she use? Yes, first of all we will make a statement. Shama bought 72 candles. Okay. Now she put 8 candles in each box. Sorry, each packets. She used packet. She used packet. Yes. Yes बेटा, we will read again. जो शामा है उसने बॉट किए हैं 72 कैंडल्स. उसने 72 कैंडल बेटा खरीदे हैं. शी पुट, अगर वो शी पुट 8 कैंडल्स इन ईच पैकेट, उसने 8 कैंडल्स है जो हर पैकेट में रखे हैं. अब नाउ हाउ मैनी पैकेट डिड शी यूज, इसने कितने पैकेट यूज किए, इसने कितने पैकेट यूज किए. तो आपको मैंने स्टेटमेंट बताया, शामा बॉट 72 कैंडल्स, उसने खरीदे 72 कैंडल्स. शी पुट 8 कैंडल्स इन ईच बॉक्स. ईच मतलब हर एक में, हर वन में उसने कितने कैंडल्स रखे, 8 कैंडल्स रखे. ठीक है. अब शी यूज पैकेट, तो आपको क्या करना है, 72 डिवाइड बाय 8. नाउ 8 9 जा 72. तो हाउ मेनी पैकेट्स डिड शी यूज, 9. ओके, 9. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Yes, so question number 6. There are 84 candies and 6 boxes. How many candies can be put equally into each box? First of all we will make a statement. There are 84 candies and 6 boxes. ठीक है. अब now candies can be put equally into each box. Yes बेटा, we will read again. There are 84 candies. यहाँ पे बेटा 84 कैंडीज हैं एंड 6 बॉक्सेस हैं. उनके बॉक्सेस कितने हैं, 6 हैं. अब क्वेश्चन, हाउ मैनी कैंडीज कैन बी पुट, हम कितने कैंडीज रख सकते हैं इक्वली यानी बराबर बराबर इनटू ईच बॉक्स, ईच यानी हर बॉक्स में हम कितने कैंडीज रख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया,
same as it is, each has come in last, so we will use of divide sign. So now we will do divide. 84 divided by 6. Now if we speak table of 6, now we will not get that type 84. We can't do that type. So you can do that, we can do that type. Okay, इस तरह. अब now we will speak table of 6. In this table 84 has come. If we speak, so that type it will be big. Yes or no? So now in this condition we will take only that one's number. In table of 6 8 has come. No. Now we will take smallest number from 8. 6 1 ja 6, 6 2 ja 12. 12 is bigger from 8. Now what will you take? We will take smallest number. So smallest is 6. So we will put here 6 and after that there. 6 1 ja 6. Now we will cut 6 from 8. You got 2. Again we will put here 4. Now we will speak table of 6. Yes, because we can do that type. We get 24 from this table. Yes. In which number? 4 ja. What will you get? 24. After that we will subtract, that is 00. Got it? That is 00. Yes beta, we can do that type also. But now it will be big. Yeah, big hoga. Okay? It will be difficult also if we do that type because you are small. So now you can do. If you can't do that type, तो now you can do that type. Okay? अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते उसको because आप अभी छोटे हैं तो you can do that type. आप ऐसे भी कर सकते हो. Both are right. आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो इसका आंसर और आप इसका आंसर ऐसे भी राइट कर सकते हो. Like 72 divided by 8 like and we can do that type also. 72 ये 9 8 जा 72 that type. Both are right. Both are right. दोनों right हैं आपके. ठीक है? Okay? Now beta, we will do next question. Question number 7. Yes, a hall has to be filled with 49 chairs. Okay, my first question is from that, how many chairs? How many chairs are needed in each row? Each row, if there are 7 rows. Okay, there are 7 rows. So like this type, first of all we will make a statement. There are 49 chairs. Okay. There are 7 rows. Now each row needs chair. Each row needs chairs. Yes beta, we will read again. A hall has to be filled with 49 chairs. जो बेटा एक हॉल है वो 49 चेयर से भरा हुआ है, फिल है. अब माई फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चेयर्स आर नीडेड, कितनी चेयर्स की जरूरत पड़ेगी इन ईच रो, हर रो को, यानी हर 1 रो को कितनी चेयर की जरूरत पड़ेगी इफ देयर आर 7 रो, अगर वहां पर 7 रो है. तो लाइक दिस टाइप वी विल डू दैट टाइप. 49 डिवाइड बाय 7, तो योर आंसर इज 7 7 जा 49. तो लाइक दिस टाइप ईच रो नीड्स चेयर, हाउ मेनी 7. ओके, अब इसी का बी पार्ट बेटा लिसन. बी पार्ट इज सेइंग हाउ मेनी चेयर आर नॉट यूज.
हाउ मैनी चेयर्स आर नॉट यूज्ड। तो यस, आंसर इज नो वन, नो वन। ठीक है, लाइक क्वेश्चन नंबर 8, गुंजन and her 5 friends share 95 marble equally. Now one question is, how many marble does each of them have? Yes बेटा, first of all we will read again. गुंजन एंड हर 5 फ्रेंड, बेटा ये गुंजन और उसकी जो 5 फ्रेंड है शेयर करते हैं 95 मार्बल इक्वली, ये 95 मार्बल इक्वली शेयर करती है। हमारी क्वेश्चन है हाउ मेनी मार्बल डज ईच ऑफ देम हैव, हर किसी के पास उनमें से कितने मार्बल आएंगे, हर किसी के पास कितने मार्बल आएंगे। तो हमने क्या किया, इसको आपका आंसर हो गया ईच ऑफ देम हैव। तो आप क्या करोगे, 6 डिवाइड बाय 95, 6 1 जा 6, 3 5 एंड लाइक 6 5 जा 30. How many left? 5. 5 is your remainder. 5 is your remainder. Okay. Now sixth question is B part from this question. How many marble are left? How many marbles are left? How many marbles are left? 5. So now your answer is 5 marbles are left. Yes beta, listen. Today we have completed our 5 chapter. Okay, and today is your SW. You are to do from 5 to 8 question in your notebook. Beta, I know very well it is your new chapter from you, because you didn't understand from you didn't understand your previous classes. It is your new, doesn't matter. If you do again practice, you can do easily. Okay, but you are to do practice in your rough notebook. If you have any problem, so you can ask on my WhatsApp number. Got it? But beta, you have to do practice. If you do more practice, so you can do understand easily. Okay. So thank you beta, and have a nice day.